Hi everyone. So finally today on 11th of December, the Honorable Supreme Court pronounces judgment with regard to the different challenges around Article 370. So finally, after rounds of hearing and as expected, today the Constitutional Bench of the Supreme Court announced its judgment with regard to different challenges which were filed in the court about the abrogation of the Article 370, the decision taken by the central government earlier. So let us look at what exactly the Honorable Court said today, and we'll also look at, for a better understanding, some of the historical timelines around Article 370. So समझते हैं कि exactly क्या judgment आया है Supreme Court का, और जो timelines हैं around Article 370 उसको भी understand करने की कोशिश करते हैं. Okay. So the first and foremost to understand is that Supreme Court upheld the validity of the abrogation or scrapping of the Article 370 in Jammu and Kashmir. The Supreme Court technically, in a way, has validated the central government position over there. Actually, central government ने Article 370 को abolish कर दिया था, जिसको Supreme Court ने valid ठहरा दिया है. And according to the court, Article 370 is basically a temporary provision, and it was actually an interim arrangement due to the war conditions in state around 1947. तो उसको परमानेंट नहीं मान करके एक इंटरिम अरेंजमेंट माना था. आर्टिकल 370 को माना है सुप्रीम कोर्ट ने. And it also said that the state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty different from other states, which means बाकी states के equivalent ही माना है Jammu and Kashmir को. और साथ साथ में ये भी कहा है कि the Constituent Assembly was never intended to be a permanent body. So जो जम्मू कश्मीर की जो Constituent Assembly थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक परमानेंट बॉडी की तरह नहीं माना है. एंड इट सेड दैट द मोमेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीज्ड टू एग्जिस्ट, the special conditions for which Article 370 was introduced also ceased to exist. So ये बहुत ही important judgment है आज जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अराउंड द एब्रोगेशन ऑफ द 370. और इसके साथ साथ ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, and that is evident from Article 1 and Article 370 of the Constitution of India. Then Supreme Court also went on to mention the fact that it cannot refuse to rule on the validity of the presidential rule imposed in Jammu and Kashmir in December 2018. Simple reason, the petitioners specifically did not challenge that basically. And at the same time, Supreme Court directed the government for the restoration of statehood in the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that needs to be done at the earliest. Okay. इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्ट किया है टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन फॉर द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली बाय 30th September 2024, which means the election commission has now around 10 months to complete the election for the Jammu and Kashmir assembly. At the same time, Supreme Court also mentioned that all the provisions of the Constitution of India can be applied to Jammu and Kashmir using Article 371D in one go. So those were the judgment by the 5-member Constitution bench today, very historical. Let us now look at exactly the timelines. Article 370 है क्या, कैसे in the entire last so many years, how things changed as far as Article 370 is concerned. So let us look at the timeline. So the entire story goes back to 26th of October 1947, when Maharaja Hari Singh, who was the ruler of Jammu Kashmir at that point of time, signed the instrument of accession acceding to the dominion of India. फिर उस समय warlike situation था with Pakistan, तो महाराजा हरि सिंह ने जो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो इंडिया के साथ साइन किया था टू बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. And on 26 January 1950, when our constitution came into force, Article 370 जो था उसने 3 broad frameworks को सेट किया. पहला जो था कि India will not make any laws in Jammu and Kashmir outside the scope set out by the instrument of accession. तो
उसके बियॉन्ड जाकर के कोई भी लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट. It also stated that except Article 1, which actually declared India as a union of states, and along with Article 370, no part of the constitution would apply to Jammu and Kashmir, which means सिर्फ Article 1 और Article 370 जो है Constitution of India के, वो अप्लाई होंगे टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. And then Article 370 cannot be amended or repealed unless the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir consents to it. तो बिना जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के कंसेंट के आर्टिकल 370 को ना अमेंड किया जा सकता था ना रिपील किया जा सकता था. On 31st October 1951, the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed, और उस समय कुछ 75 मेंबर्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे वो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और फर्स्ट सिटिंग हुई थी उनकी. 1954 मई में जो आर्टिकल 35 को इंट्रोड्यूस किया गया, विच कन्फर्ड स्पेशल राइट्स टू द परमानेंट सिटीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो एक और आर्टिकल ऐड होता है जिसके तहत कुछ राइट्स, स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं टू द परमानेंट सिटीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. 1956 नवंबर में जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है विद द डिक्लेरेशन दैट जम्मू एंड कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. सो दिस हैपेंड ऑन 17 नवंबर 1956. चीजें प्रोसीड करती रहती हैं अपने टाइमलाइन से until on 20th June 2018 when government rule was imposed in Jammu and Kashmir after political breakdown. BJP pulls its support from the PDP government at that point of time. Government minority में चली जाती है and then government rule was imposed in Jammu and Kashmir because of that. 2019 5th और 6th अगस्त की टाइमलाइन है. फर्स्ट राज्यसभा 5th अगस्त एंड देन लोकसभा ऑन 6th of August. जो पार्लियामेंट है विच इज डेफिनेटली इंक्लूडिंग राज्यसभा एंड लोकसभा, पार्लियामेंट ने एक statutory resolution पास किया which recommended the abrogation of Article 370 and the Jammu and Kashmir Reorganization Act was introduced. ठीक है. So जो प्रेसिडेंट थे उस समय, तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे, the then president of the country, Ramnath Kovind, he subsequently issues an order rendering Article 370 redundant and removing the special status which was earlier granted to the state of Jammu and Kashmir. ठीक है. तो जितने भी प्रोविजंस थे आर्टिकल 370 के, they ceased to operate on that day after the president gave his assent to that order, except for the clause 1. अब clause 1 क्या बोलता है? clause 1 बोलता है कि constitution of India will operate in the state of Jammu and Kashmir. ये जो clause 1 है 370 का, आर्टिकल 370 का, वो बोलता है कि constitution जो है इंडिया का, वो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करेगा, वैलिड होगा वहां पे. 9th August, 3 दिन के बाद, 9th August 2019, the Union Parliament passed the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, जिसके तहत जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था उसको स्प्लिट कर दिया जाता है 2 यूनियन टेरिटरीज में, one being Jammu and Kashmir, the other being Ladakh. And it was also decided that the Union Territory of Jammu and Kashmir will have a legislative assembly. Meanwhile, Ladakh will not. Okay. So आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है in its judgment कि elections held किए जाए for the legislative assembly by 30th September 2024. Okay. 3rd जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट जो था उसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया which was headed by Chief Justice of India, Justice D.Y. Chandrachud, along with other justices S.K. Kaul, Sanjeev Khanna, B.R. Gawai and Suryakant. So it is a 5-member constitutional bench जिसके जो ये petitions के अराउंड हियरिंग कर रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त 2023 को जितने भी पिटिशंस थे, 22 पिटिशंस जो थे, वो जो चैलेंज कर रहे थे अबॉलिशमेंट ऑफ आर्टिकल 370, उनको कंबाइन करके हियरिंग शुरू किया था. एंड व्हेन द हियरिंग गॉट कंप्लीटेड, दे kept preserved the judgment which was pronounced today morning, and finally Supreme Court upholds abrogation of Article 370. तो ये है entire story अगर हम बात करें Supreme Court judgment on Article 370, and I'm sure you would have understood by now Article 370 के provisions और जो important timelines थे. Very important judgment coming out from the court today. So that was all about it today.
We'll continue to bring such informative sessions, such videos for you. Don't forget to subscribe the channel and like this video.